हेलो एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस जो टोटल 9 शिफ्ट्स में आए थे। तो टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थे जो 9 शिफ्ट्स में आए थे वो थे 29। तो पॉलिटी की वेटेज काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये होता है 350B। Question number 2. Which of the following articles empowers the President to make regulations for the peace, progress and good government of the Union Territories? तो ये होता है Article 240. Question number 3. Which of the following articles states that there shall be a legislative assembly for the National Capital Territory and the seats in such assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the National Capital Territory? तो ये होता है Article 239AA. उसके बाद यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट मेंशन दैट द फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होता है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। तो ये होगा हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Question number 6. Which article of the Indian Constitution permits the Supreme Court to review its judgment or order? तो ये होता है Article 137. Question number 7. Which of the following constitutional amendments inserts the Special Officer for Linguistic Minorities, who is known as Commissioner for Linguistic Minorities in India (CLM), to investigate all the matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and report to the President? तो ये होता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 1956? तो ये हुई थी 6। क्वेश्चन नंबर 9। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2019 एंड वॉज operationalized after the rules for it were notified by the Ministry of Home Affairs on 11 March 2024. Question number 10. Which of the following committee suggested that the duty to pay taxes should also be a fundamental duty of Indian citizen? तो ये थी स्वरण सिंह कमेटी। Question number 11. According to clause 2 of Article 239A, any law related by the Parliament for Puducherry shall not be considered an amendment to the Constitution for the purposes of which article? तो ये हमारा आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 12। द कंसेप्ट्स ऑफ डबल जेopardy, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो आर मेंशन्ड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आर्टिकल 20। क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, इंडिविजुअल्स हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 December 2014 and belong to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Pakistan, Afghanistan or Bangladesh are eligible for citizenship. Question number 14. Article 51A, Section B of the Indian Constitution states that it is the duty of the citizens to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom. Question number 15. Which of the following articles deals with elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of the state to be on the basis of adult suffrage? 326. Question number 16. Who among the following was first Attorney General of independent India? ये थे MC Setalvad. Question number 17. Which of the following is related to Article 84 of the Constitution? तो ये है qualification for membership of Parliament. Question number 18. Which of the following articles deals with Finance Commission that distributes taxes between center and state? तो ये है Article 280. Question number 19. Every year, foreign trade policy has been declared by which ministry of the government of India? तो यह है Ministry of Commerce and Industry. Question number 20. Who among the following is the leader of the House in the Lok Sabha? The Prime Minister. Question number 21. Which of the following articles deals with the provisions regarding the election, qualification and removal of the Vice President of India? तो ये होता है आर्टिकल 63 to 71. क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enunciate the doctrine of basic structure?
तो ये था केशवनंदी भारती केस। क्वेश्चन 23, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो ये था आर्टिकल्स 12 to 35। क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज उमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 24 of the Indian Constitution prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or other hazardous activities. Question number 26, which of the following rights is not part of the right to life under Article 21 of the Indian Constitution? Right to property. Question number 27, how many members of the Rajya Sabha are nominated by the President of India? So the 12. Question number 28, which of the following is not a function of the Prime Minister in India? The appointment of the Supreme Court judges. Question number 29, which of the following is not an essential qualification for being elected as president? So इसका होगा highly educated. So guys, इसी के साथ 2024 की सभी 9 शिफ्ट्स में करंट अफेयर्स के अलावा जो कुछ भी थे क्वेश्चंस जीके के, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी, सभी की डिफरेंट वीडियोस, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, तो उसके बहुत सारे अप्रॉक्स 90 या 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं सबसे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो, एंड साइंस की वीडियोस भी जल्दी डालेंगी। थैंक यू।